नमस्कार, आदाब एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं शदाब ये मास मीडिया थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। आज मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के गेट नंबर 8 में इंडिया अरब कल्चरल सेंटर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर हम आपको इंडिया अरब कल्चरल सेंटर क्या है, कैसे है और कैसे इसकी स्थापना हुई, इन सब पे विस्तार से चर्चा करने के लिए मौजूद है। इंडिया अरब कल्चरल सेंटर 2009 में प्रोफेसर मुशीरुल हसन के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। यह भारत का पहला ऐसा सेंटर है जो दो बड़े सभ्यताओं अरब और भारत की सभ्यताओं को बढ़ावा देता है और इसके साथ साथ अरबी भाषा को भी भारत में बढ़ावा देने का काम किया है। इंडिया अरब कल्चरल सेंटर दो सभ्यताओं को आपस में जोड़ने के साथ साथ बढ़ाने का एक काम किया है। यहाँ शुरू में 2009 में जब यह सेंटर स्थापित किया गया तो दो कोर्सेज ऑफर किए जाते थे, एमफिल इन अरबिक कल्चर और पीएचडी इन अरबिक कल्चर। उसके बाद 2 साल पहले ही फिर 2 कोर्स और बढ़ा दिए गए इंडिया अरब कल्चरल सेंटर में, और यह 2 कोर्स है एमए इन अरबिक स्टडीज़, अरबिक कल्चरल स्टडीज़। आज हम जामिया मिलिया इस्लामिया के इंडिया अरब कल्चरल सेंटर से आपको यह भी बताते चले कि इंडिया अरब कल्चरल सेंटर ने भारत और अरब देशों के बीच दो बड़े सभ्यताओं के बीच संबंध अच्छा करने के साथ साथ एक तरह से दोनों सभ्यताओं को विश्व स्तर पर लाने का भी काम किया है। इस सेंटर का नाम अरब देश के एक मशहूर इतिहासकार इब्न खल्दून के नाम पर इस अरब कल्चरल सेंटर का नाम इब्न खल्दून बिल्डिंग रखा गया है। चलिए हम ले चलते हैं आपको इंडिया अरब कल्चरल सेंटर में और यहाँ दिखाते हैं कि क्या कैसे सेंटर बना हुआ है और इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। और इसी के चलिए बात करते हैं इंडिया अरब कल्चरल सेंटर में एक प्रोफेसर डॉक्टर एहसान रज़ा से। बीए मास मीडिया सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। अभी मैं इंडिया अरब कल्चर सेंटर के चैम्बर में मौजूद हूँ। हमारे साथ डॉक्टर ahsan रज़ा सर मौजूद हैं। मैं इनसे बात करता हूँ कि इंडिया अरब कल्चर सेंटर कब शुरू किया गया था और क्या क्या कोर्सेज ऑफ़र किए जाते हैं, और उनके साथ इंडिया अरब कल्चरल सेंटर से इंडिया अरब के रिलेशन पे क्या असर पड़ा है। जी सर। जी, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि ये शुरू क्यों किया गया था और क्या मकसद था इंडिया अरब कल्चर सेंटर शुरू करने का, क्योंकि हिंदुस्तान का ये पहला सेंटर है पूरे एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में माना जाता है कि जामिया में इंडिया अरब कल्चरल सेंटर पहला सेटअप है जो एक अरबिक लैंग्वेज को, अरबिक कल्चर को बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया। ये एक्चुअली है कि ये 2008 में इनको मुशीरुल हसन साहब के ज़माने में शुरू किया गया और ये इस नेचर का पहला सेंटर है। अदरवाइज वी हैड Arabic languages in various centers in state universities throughout India, and there were some other centers which were focusing on culture and cultural studies related to Arab world, was Oriental studies, it was earlier known as Oriental studies, and was situated in Lucknow and somewhere else. But in a modern context where culture and cultural studies, politics around culture has evolved over the postmodernity times of development, then this center has been developed to study the cultural relations between India and Arab world. In 2008, firstly it was based or it targeted, it was not named, it offered in fact PhD programs in Gulf studies, and during that period of time, as I remember, it was not only PhD, even this center offered MPhil courses for 2 years. But in 2017 and 18, the nomenclature of the courses has been changed. From PhD and MPhil in Gulf studies, it has been named as International Studies in Arab Islamic Culture. So now we are offering two courses, that is first Masters, MA in International Studies Arab Islamic Culture, and PhD in International Studies Arab Islamic Culture. These are the courses. Yes. My last question is that if I ask what is the main contribution in the foreign policy regarding Indian and Arab culture?
See, it is not about directly we are focusing on Indian IR kinds of understanding. Our courses is related to that. When we talk about contributions of this center it is huge. Most noted books, historical books, and even English books which are related to India and other world, and it has been produced or written into other languages, particularly English, Hindi, Urdu. These books have been translated to Arabic, and even we had various famous books from Arab world, and those books are converted into Indian languages first. Secondly, as you know, the understanding of culture through the prism of new imperialism, the discourse of politics has somehow got some changes. And here we are offering the courses based on primary sources, which are very much related to both the regions, India and Arab world. Directly our concern is that how these two regions are related or interlinked in the spheres of culture and cultural studies. And somehow it, like today recently India talks about Indian philosophy, Indian knowledge system, and in that context the exchange between these two regions are very much prominent and helps to build new kinds of understanding and to create a new relations. So my last question is that it is not doubtful question. Could you suggest any prominent personality in the contribution of India-Arab culture from this center? See, this center is very new. It has been established in 2008. Yes. Earlier, as a director, we had Professor Zikrur Rahman Saab, who was ex-ambassador and cultural deputy of Palestine and all. He is one of the leading figures of cultural experts into this context. And even the next in line who contributed very well, the current Professor Ahsan Raza is also very much expert into the field of culture, Islam, and Dr. Ahsan Raza is here. He is expert of the relations between cultural sphere, particularly culture may be in expertise and literature school, and contributions to the Indo-European exchange historically to the ages. There are huge contributions. तो इन लोगों के एक्सपर्टीज हैं सेपरेट अलग अलग, क्योंकि नया सेंटर है एज पर से हमारे स्कॉलर्स अभी PhD करके निकले हैं. कंट्रीब्यूशंस की जहाँ तक बात है, हमारे जूनियर कोलीग इस बार आए हैं, डॉक्टर अब्दुल्ला, तो ये भी यही इसी सेंटर से PhD किए हैं. इज़ वेरी मच एक्सपर्ट ऑफ दिस Arab culture in India. We can say that here Arabic language is also taught. Yes, of course. You cannot visualize culture without language. Yes. Thank you, sir, for giving me such a wonderful time and productive interview.